Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So each word is divided into two parts with the help of apostrophe symbol. We need to stress on the word before the apostrophe for correct pronunciation. So here are the next set of 25 words. First word is breather. A short pause or rest, a moment to catch one's breath. ब्रीदर को हम हिंदी में विश्राम कहते हैं, उर्दू में छोटा सा वक्फा, तेलुगु में ऊपिरी. For example, after a long day of meetings, he needed a breather before the evening event. Next word is breathtaking. Extremely exciting, beautiful or impressive, stunning. ब्रेथ टेकिंग को हम हिंदी में आकर्षक कहते हैं, उर्दू में खुशी की कैफियत, तेलुगु में आश्चर्यजनक मायना. फॉर एग्जाम्पल, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज ब्रेथ टेकिंग विथ वास्ट लैंडस्केप्स स्ट्रेचिंग बिलो. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीज. अ जेंटल विंड, समथिंग ईजी टू डू. ब्रीज को हम हिंदी में हवा कहते हैं, उर्दू में ताज़ी हवा, तेलुगु में गाली. फॉर एग्जाम्पल, the breeze rustled the leaves as the sun set over the calm lake. Next word is bribe. To give or receive something of value with the aim of influencing the actions of an official or other person. Bribe को हम हिंदी में घूस कहते हैं, उर्दू में रिश्वत, तेलुगु में लंचम. For example, the corrupt official was caught accepting a bribe in exchange for favors. Next word is bridal. रिलेटेड टू अ ब्राइड और अ वेडिंग सेरेमनी. ब्राइडल को हम हिंदी में विवाह का कहते हैं, उर्दू में दुल्हन या शादी के बारे में, तेलुगु में वैवाहिक संबंध मायना. फॉर एग्जाम्पल, शी चोज अ ब्यूटिफुल ब्राइडल गाउन फॉर हर वेडिंग डे. नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइड. अ वुमन हु इज़ अबाउट टू बी मैरिड और हैज़ रिसेंटली बीन मैरिड. ब्राइड को हम हिंदी में दुल्हन कहते हैं, उर्दू में दुल्हन, तेलुगु में वधू. For example, the bride looked radiant in her white wedding gown. Next word is bridegroom. A man who is about to be married or has recently been married. Bridegroom को हम हिंदी में वधू कहते हैं, उर्दू में दूल्हा, तेलुगु में वरुडू. For example, the bridegroom patiently waited for the ceremony to begin. Next word is brief. Short in duration, concise or to the point. ब्रीफ को हम हिंदी में संक्षेप कहते हैं, उर्दू में मुख्तसर, तेलुगु में संक्षेपम. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन समराइजिंग द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च. नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइटन. टू मेक और बिकम ब्राइटर, टू ऐड लाइट और कलर. ब्राइटन को हम हिंदी में निखारना कहते हैं, उर्दू में रोशन करना, तेलुगु में प्रकाशवंतम चेस्ताई. For example, the flowers in the garden brightened the entire backyard. Next word is brilliant. Exceptionally intelligent or talented, shining brightly. Brilliant को हम हिंदी में शानदार कहते हैं, उर्दू में शानदार, तेलुगु में तेलिवाइना. For example, the scientist made a brilliant discovery that revolutionized the field of physics. Next word is brisk. एनर्जेटिक एंड क्विक, लाइवली एंड एक्टिव. ब्रिस्क को हम हिंदी में तेज़ कहते हैं, उर्दू में चुस्त, तेज़, तेलुगु में चुरुकाइना. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिस्क वॉक इन द मॉर्निंग हेल्प्ड वेक हिम अप एंड प्रिपेयर फॉर द डे. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिटल. ईजिली ब्रोकन और शैटर्ड, लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी. ब्रिटल को हम हिंदी में टूटने योग्य कहते हैं, उर्दू में नाजुक, तेलुगु में पगुलगोट्टू. For example, the brittle branches of the old tree couldn't withstand the strong wind. Next word is broad. Wide in extent or scope, having a wide range. Broad को हम हिंदी में विस्तृत कहते हैं, उर्दू में वसी, तेलुगु में विशालमाइना. For example, the river flowed through a broad valley surrounded by hills. Next word is broad-minded. Open-minded and tolerant, willing to consider different perspectives. Broad-minded को हम हिंदी में व्यापक सोच वाला कहते हैं, उर्दू में आज़ाद ख्याल, तेलुगु में विशाल मनस्तत्वम कलवाडू. For example, a broad-minded approach to cultural differences fosters understandings and acceptance.
Next word is brochure, a small booklet or pamphlet containing information or advertising material. ब्रोचर को हम हिंदी में पुस्तिका कहते हैं, उर्दू में इश्तहारी किताब, Telugu में brochure. For example, the travel agency provided a brochure with details about the vacation packages. Next word is broken, damaged or in pieces, not functioning properly. ब्रोकन को हम हिंदी में टूटा हुआ कहते हैं, उर्दू में टूटा फूटा, तेलुगु में विरिगिपोइंदी. फॉर एग्जाम्पल, the vase lay broken on the floor after it fell off the shelf. Next word is bruise, a discoloration of the skin caused by a blow or impact. bruise को हम हिंदी में चोट कहते हैं, उर्दू में चोट जख्म, तेलुगु में गायमु. For example, she applied a cold compress to the bruise to reduce swelling. Next word is burn, to cause damage to the skin or other tissue through exposure to heat or flames. बर्न को हम हिंदी में जलना कहते हैं, उर्दू में जलना, तेलुगु में कालचंडी. फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल नॉट टू बर्न योरसेल्फ व्हेन हैंडलिंग हॉट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल, एक्सट्रीमली क्रूल और हार्श, लैकिंग इन मर्सी और ह्यूमैनिटी. ब्रूटल को हम हिंदी में कठोर कहते हैं, उर्दू में हैवानी, तेलुगु में क्रूरमयना. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स लेड टू इंटरनेशनल कंडेमनेशन. नेक्स्ट वर्ड इज बफर, समथिंग दैट reduces द इम्पैक्ट ऑफ अ शॉक और डिस्टर्बेंस, अ प्रोटेक्टिव बैरियर. बफर को हम हिंदी में प्रतिरोधक कहते हैं, उर्दू में बफर, तेलुगु में बफर. फॉर एग्जाम्पल, the forest acted as a buffer, absorbing the force of the strong winds. Next word is buffoon, a person who engages in clownish or silly behavior, a clown. बफून को हम हिंदी में विदूषक कहते हैं, उर्दू में मस्करा, तेलुगु में जोकर, हास्यगाडू. For example, the comedian's antics made him the favorite buffoon of the audience. Next word is build, to construct or make by assembling parts, the physical form of a person or structure. build को हम हिंदी में निर्माण कहते हैं, उर्दू में तामीर करना, तेलुगु में कट्टू. For example, the architect designed a modern building with a unique and innovative structure. Next word is bulge, a rounded swelling or protuberance, to swell or protrude outward. bulge को हम हिंदी में उभरना कहते हैं, फूलना, उर्दू में उभर आना, तेलुगु में उब्बुकनी उंडुटा. For example, the backpack created a bulge in his jacket as he carried it. Next word is bulk, the mass or magnitude of something, a large quantity. bulk को हम हिंदी में बड़ी मात्रा में कहते हैं, उर्दू में भारी मिकदार, तेलुगु में चाला मुत्ता. For example, buying in bulk often leads to cost savings at the grocery store. Next word is bypass, a road or passage that avoids a congested or dangerous area. bypass को हम हिंदी में bypass कहते हैं, उर्दू में दूसरा रास्ता, तेलुगु में bypass. For example, due to the accident on the main highway, drivers took the bypass to avoid delays. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.